मैं बिला ताखिर अब इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मोहम्मद इरफान को दावत सुखन देता हूँ कि वो आए और इंग्लिश तकरीर पेश करें। मस्जिद लगी थी दांव पे कुरान जद में है, मस्जिद लगी थी दांव पे कुरान जद में है, पहले तो तू था अब तेरा ईमान जद में है, जागो मुसलमानों। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। Honorable President, respected teachers and my dear friends, I am going to deliver my speech on the topic ideal manner of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. My dear audience, Allah is many prophets and messenger to guide the people. He was last prophet. He was so honest, kindness and trustworthy. In his dealing, the people used to call him Al-Amin, Al-Sadiq. He was very kind, sympathetic and soft-hearted in his treatment. He said, إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. I have been sent to complete good manner. He was good-natured, kind, truthful, civilized. Hazrat Hassan bin Sabit radiyallahu anhu praised in this word, وأحسن منك لم تر قط عيني وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرعا من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. My dear elders, at last it is compulsory for every true Muslim to follow the conduct of our beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam properly. I pray that may Allah follow on behalf Muhammad sallallahu alaihi wasallam in every act. That's all. I finish my topic. Allah bless us and you. وما علينا إلا البلاغ. السلام عليكم. वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह।